Good morning, children. Welcome back to our English classes. Let's complete the poem A Tiger in the Zoo by discussing the poetic devices and the exercises given at the back of the poem. The poet Leslie Norris uses a number of poetic devices, figure of speech, to beautify the poem. So let's go through the devices that he has used in this poem. The poem from the beginning till end has got a lot of alankar. The first word is, he. Actually, the pronoun for an animal is it. But here he uses he. He's giving the importance of a human being, attributes of a human being to the tiger. So he is the personification. An animal is personified here. Complete feeling उसका दिखाकर हमारे को human जैसे टच दिखा रहे हैं. So that's why he has used he instead of it. So here he is personification. हम उसको कहते हैं ना मानवीकरण. Okay. And now then in the same way we can see in his vivid stripes. First line. In his vivid stripes. You can see I repeated. The vowel I repeating is repeated. So we call it assonance. Assonance is A-S-S-O-N-A-N-C-E. Assonance. Assonance is repetition of vowel. Okay. In the same stanza we can see quiet rage. Quiet rage? What do you mean by that one? Rage cannot be quiet. Rage माने गुस्सा, अपार गुस्सा, aggressiveness, ferociousness. तो उसका गुस्सा, that is quiet. That means just the opposite words, isn't it? Rage cannot be quiet. किसी आदमी को गुस्सा आ जाता है, चिल्लाता है, चीखता है. अभी hammer, the rage is quiet. So such words are used, just opposite. The quiet rage is an instance of oxymoron. Oxymoron, the spelling is O-X-Y-M-O-R-O-N. That's oxymoron. Oxymoron is using a combining the opposite words. Sure? And then come to the second one. In the first and second one, we get an image of the tiger. Image means हमारे सामने वो टाइगर का दृश्य नजर आता है. टाइगर हमारे सामने नजर आता है when he is in the zoo and when he is in the jungle. So the poet has described the tiger with words. He has produced an image in us. That means टाइगर का क्लियर इमेज, वो रूप और जो मूवमेंट्स हमारे को साफ नजर आ रहे, उसको हम अपनी इमेजिनेशन में देख सकते हैं. सो वी कॉल इट इमेजरी. IMAGERY. पर्सोनिफिकेशन हो गया, assonance हो गया, oxymoron हो गया, देन इमेजरी हो गया. Sure. Then आगे चलते चलते you will get alliteration. Alliteration क्या होता है? जैसे come to the second stanza, you can see plump and pass. Second stanza, the last line, plum deer pass. P and P. That means alliteration. Consonantal sounds at the beginning repeated. Neighboring words में, आसपास के वर्ड में same letter, consonantal letter से शुरू हो जाए,
रिपीट किया जाए, we call it alliteration. So, plum and pass. नीचे आ जाओ. Then first, second, third, fourth में आ जाएगा behind bars. उससे पहले concrete, cell, C and C. Sure. So these are called alliteration. So we can see क्या क्या गया? Personification. Then एक metaphor. Metaphor आपको पता है रूप का अलंकार कहाँ मिलेगा? Come to the first stanza. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage on pads. He walks on pads. है ना? वो चलता है किस पे? पैरों पर नहीं. On pads of velvet quiet. On pads of velvet quiet. क्या बता रहे? वो वेलवेट क्वेट वो नहीं बोल रहे, वो पंजे पर चल रहे हैं, लेकिन पैड पर चल रहे हैं. इसका मतलब है उसका रूप में उन्होंने थोड़ा सा हमारे को ऐसा बता दिया, वो पाव नहीं, एक्चुअली दैट्स ए वेलवेट पैड. सो वी कॉल इट ए मेटाफर. रूप का अलंकार है ना. पाव का दिखाई नहीं दे रहे, पाव नहीं, वो फिर क्या था? इट इज ए वेलवेट पैड. सो दैट इज मेटाफर. सो मेटाफर मिल गया, इमेजरी मिल गया, alliteration मिल गया, assonance मिल गया, oxymoron मिल गया. Then one more, that is enjambment. Write it down. Enjambment. ENJAMBMANT. We call it enjambment. Spelling is ENJAMBMENT. What is that? Come to stanza 1. Stanza 1 में फर्स्ट लाइन देख लो. फर्स्ट लाइन खत्म होने के बाद वहाँ कोई कोमा, पंक्चुएशन मार्क कुछ भी नहीं है ना. ऐसे सेकंड स्टैंजा में आ जाओ. सेकंड एंड थर्ड लाइन के बाद भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं. देन थर्ड लाइन में आ जाओ, थर्ड स्टैंजा में आ जाओ. थर्ड स्टैंजा फर्स्ट लाइन, there is no punctuation mark after the line. So in the fifth and the last stanza में आ जाओ. थर्ड लाइन के बाद भी punctuation mark nahi. So that means the line continues to the next line without a punctuation mark. हमारे को बाकी सभी में देख लो, there are commas, full stops, है ना, it is there. But in these lines we don't have the poet does not use any punctuation mark. That means one line continues to the next line with the same meaning, but the poet does not stop it there. That is called enjambment. Sure. So these are the poetic devices used by the poet. Sure. Personification, metaphor, oxymoron, imagery, alliteration, assonance, and enjambment. These are the poetic devices used by the poet. Got it? Now let's go to the exercise. Exercise means at the back of the poem there is a thinking about the poem. Come back to the thinking about the poem. Read the poem again and work in pairs or groups to do the following task. What is that? Find the words that describe the movement and actions of the tiger in the cage and in the wild. What's the question once again? Find the words that describes the movements and action. Movements and action. Action word बताइए. जिस वर्ड से आपको मूवमेंट का पता हो जाए ऐसा वर्ड बताइए. कहाँ पे? केज में भी और वाइल्ड में भी. वाइल्ड मीन्स इन जंगल. जंगल में मूवमेंट्स बताने वाला या एक्शन बताने वाला. टाइगर की एक्शन. Action and movement of the tiger in the cage and in the
wild. You have to arrange them separately. Come back to the stanzas. सबसे पहले the movements and actions of the tiger in the cage. Cage में क्या क्या करता है वो? So for that you have to combine together the stanzas that describe the cage. That means the first stanza, the fourth one and the fifth one. That is a cage. In the first one you can see stalks. Stalks means movement. Then और कुछ नहीं, stalks आ गया. Then fourth में again stalks, है ना? Ignores, yes, ignores आ गया. Then last में hews and stares. These are the movements and actions of the tiger in a cage. Stalks, ignores, hews and stares. वो घूमता है, इग्नोर करता है, सुनता है, घूरता है. यही काम करता है ना? Yes. Wild में देखो. That means in the 2 stanzas only. Lurks, lurking, should be lurking. Lurks ले लो. Lurks, slides, yes. Then pass नहीं होगा क्योंकि deer pass है ना. So deer is passing, not the tiger. Tiger की movements बताइए. Snarls, okay, correct. Then bears, है ना, white fangs को दिखा देता है ना. Yes. Then terrorizes. Sure. क्या क्या आएगा? Lurks, slides, snarls, bears, then terrorizes. Sure. These are the movements and actions that a tiger do in the wild. So you got movements and actions that the tiger do in the cage and the movements and actions that the tiger do in the wild. You got it? Now the next one. See, next question is find the words that describe the 2 places and arrange them in the columns. The words that describe the places. कहाँ का जवाब मिले. कहाँ फर्स्ट में आ जाओ. कहाँ? His cage. क्लियर? केज तो ऑलरेडी हमारे को बता रखे केज में, लेकिन फिर भी केज. फिर केज वाला आ जाओ. इन ए कॉन्क्रीट सेल, है ना? कहाँ? इन ए कॉन्क्रीट सेल. देन कहाँ? बिहाइंड बार्स. और कहाँ? कहीं नहीं. So we go to lay the place in the cage, in the concrete cell, behind bars. कहाँ पर? सरिया के पीछे. अच्छा, वाइल्ड पर आ जाओ. इन शैडो. कहाँ? खाली शैडो से नहीं. कहाँ? इन शैडो, छाया में. नेक्स्ट, थ्रू लॉन्ग ग्रास, है ना? देन नियर द वाटर होल. सही कह रहे. कहाँ? पानी के स्रोत के पास. फिर कहाँ? अराउंड हाउसेस, है ना? घर के आसपास. देन at the jungle's edge. Yes, is it there? Yes, at the jungle's edge. और कहाँ? और कहाँ? नहीं, कहीं नहीं. That's all. That means in shadow, through long grass, near water hole, around houses, at the jungle's edge. These are the places. कहाँ? उसके जवाब. केज वाले में office cage, in concrete cell and behind bars. Okay, these are the words that describe the places. Got it? कोई न्यू आंसर है? देख लो, फिर से देखो, कहीं और मिल जाए जिसकी आंसर आपको कहाँ मिलना चाहिए. कहाँ जगह का पता चलो. द विलेज,
ना terrorizing the village. Village कहाँ के नहीं, village माने गाँव, गाँव में वो नहीं, कहाँ के जवाब नहीं. That's right. Now try to share the ideas, share ideas about how the poet uses words and images to contrast the two situations. Now, second one. Notice the use of a word repeated in lines such as these. Repetition बता रखा है. कौन सी? On pads of velvet quiet in his quiet rage. Which word is repeated here? On pads of velvet quiet in his quiet rage. Which word is repeated here? Yes, you know quiet. पहले वाले में भी quiet है, second वाले में भी quiet है. So इसका क्या मीनिंग है? नीचे पूछ रहे. What do you think is the effect of this repetition? ये कवि क्यों इसको रिपीट किया गया है? Actually कवि क्या कहना चाहता है? The tiger is not in his original form. है ना? यही तो कह रहे हैं ना. The tiger is not in his original form. He is not a ferocious animal. He is not showing. He is very submissive now. He is very quiet now. His complete ferociousness is suppressed. हमने इसको natural life दे ही नहीं रखा. He is leading an artificial life, an unnatural life. So the poet wants to emphasize. The poet is giving emphasis. The poet is emphasizing, stressing upon the fact that the ferocious animal is quiet. He is quiet. He is walking velvet quiet. He has got a quiet, pose. But at the same time, his rage is quietened. That quiet is repeated because now the animal is not using any of his natural instinct for leading his life. He is not leading a natural, original life. He is suppressed. His complete instinct is suppressed. He is under control. So that's why the poet wants to give emphasis on this thing, that the animal is not happy. Same way, now one more is there, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Here also the poet wants to give the pathetic plight condition of this animal. The animal got brilliant eyes. Yesterday I told you that he can see through the night. He's got shining amber eyes. But it's of no use here. Actually, God has given him this instinct, this natural instinct to hunt, to have his skill. But here, it's of no use. Instead of searching for the animals, he uses these eyes and he finds nothing but brilliant stars in the sky. The brilliant is repeated here to show the hopelessness, the agony, the helplessness of this animal, and how we people, human beings, kill the originality of these animals by putting them in confinement, by building zoos for them. So that is why the poet wants to tell us that it is something inhuman, injustice that we are showing to these mute animals. बेचारे बोल नहीं सकता, बांधने के बाद वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हम उसके साथ बहुत अन्याय कर रहे. तो the poet wants to stress upon the injustice shown by the human beings to these animals, and we really kill the natural instinct, originality of these animals by putting them in confinement. Actually हम क्या कहते हैं, इन जानवरों को बचाने के लिए जू बनाया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये जू में इनका लाइफ बहुत दुखदाई है, बहुत परेशानी उठाने लायक है. Okay, that's why. Now read the following two poems, one about a tiger and the other about panther, then discuss.
उसके नीचे आपको द टाइगर एंड द पैंथर दे रखा है. ये दोनों हमारे टेक्स्ट में नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड. देन यू हैव टू आस्क, गिव दिस आंसर. आर zoos necessary for the protection of or conservation of some species of animals? जू बनाना ज़रूरी है या नहीं? डू यू थिंक जू बनाना ज़रूरी है? जू बनाना ज़रूरी है? हाँ जी है तो क्यों? क्योंकि हम उनको मार रहे. जानवर के जीवन के लिए हम सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है. ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट ferocious animals in this world. सबसे खतरनाक, the most dangerous animals in the world is human beings. वो कुछ भी कर सकता है ना. इसलिए बेचारा सारे जानवरों को हम पकड़ पकड़ के बंदी बना रखा है. सो आई डोंट थिंक इफ ह्यूमन बीइंग्स आज अभी जो हमारी स्थिति हो गया ना, इससे जैसे कुछ महीना इससे चले तो हमारे को भी पता चल जाएगा. क्या बंदी बनाने से, किसी जगह पर हमारे के चार दीवार में बंद रखने से होता क्या है. शायद इंसान दोबारा सोचे. शायद ईश्वर ने उनकी सोच बदलने के लिए ऐसी स्थिति, वायरस, ऐसे कोरोना दिया हो. क्या पता हो जाए बच्चे, आपकी सोच परिवर्तन किया जाए. कल हम प्रकृति के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं करें. लेट द एनिमल्स लिव वन, लेट लिव. जियो और जीने दो. सो जू बनाना ज़रूरी नहीं है. इफ़ वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स इन द वर्ल्ड, हम ह्यूमन बीइंग्स, सबको जीने दिया जाए, सबको अपनी अपनी जगह में रहने दिया जाए, then there is no need to preserve the animals in the zoo, because wherever whatever is there, बंधन तो बंधन ही है ना. सोने की पिंजड़े में भी रखो पंजी, तो बंधन में आने के बाद वो खुश कभी होती नहीं, उसको गगन में उड़ना है. इसी जैसे जानवरों को अपना सोयर जीवन के लिए आपको इनको जंगल में उनके ओरिजिनल लाइफ में छोड़ना होगा. दैट इज़ द इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स होना चाहिए. ओके, वी विल मीट अगेन टुमारो विद अ न्यू पोएम. टिल देन, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.